SQL package is the second module in which we will further explore other things which are basically relevant to the packages. तो पैकेज को हमने पहले मॉड्यूल में जो डिस्कस किया उसमें ये बताया है कि पैकेज इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स based on purposefulness, based on demand, based on segregation, to stop the segregation and make a collective decision on the basis of some kind of modules or on the basis of some kind of business terminology, so that rather we can spread over our function and procedure all over the schema. We can put and concise and collect in separate packages. So we will manage that what exactly packages are, their specification, their body and hiding and user specification concepts, and invoking package as a subprogram as well. Selected and purposeful collection of procedure functions and variables are basically managed within the package. So package has two portions. One is called specification. The other one is called body of the package. Then we can say invoking package or some its subprograms, how to call them and how to execute them. Abstract programming concept, which is basically part of the package, and to avoid spreading of procedures and functions. It is a stored object, so that's why it will be accessible. Its informations can be captured by using data dictionary called user underscore source, the way we have done already in the functions and procedures. So let's see, we have a package specification. So in this particular package specification, as we have mentioned, that we can manage this one as a global variable. So this variable is basically accessible within all the objects, within all the subprograms given in this particular package. So v count can be used here in the body, or it can be used here in the body. So anywhere it can be used. So in this particular cases, we can say that v count is basically a shared kind of variable that can be used. Similarly, we mentioned the statement that okay, how these are done and how these are done over here. We have some small mistake here, which basically a error message. When you execute this one, you can fix it. So over here we just define this one, which are the parameter, which are the data types. Similarly, here the data types are mentioned here. Now we have a one parameter requires because it's a delete record, so we need it for its where clause, this particular parameter. Now next we have a package body of this particular package called employee information. So in this one we have a one body of the package, we have a second body of the package, we have a third one where we have removed the particular records and we need only one parameter. So this is how we can manage it. Similarly, we can find out the total salary and then we return the value based on what we have a return value over here. So this body can be kept as a hiding place, or no need to show up. So when we transport or when we provide our software application to the client, we can just compile and execute the body, and then rest of the things will be hidden to the user, and we can stop their access from the security point of view. Following are its main purposes. Make code more modular means के आप अपने मॉड्यूल्स को एक ग्रुपिंग और मॉड्यूल्स की फॉर्म में सेपरेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सेल्स का कोड और रूल्स रेगुलेशंस आप अलग कर लें, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अलग कर लें. इसी तरीके से आप पे रोल के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं या जो आपने इसके रिलेटेड जो कोडिंग की है वो आप सेपरेट कर सकते हैं. Hide implementation details are normally important when we deploy our software application on the client side and we provide the code along with the application. At that time, we just compile it and take it out, the source code away from it, so that our proprietary or ownership will stay there. Performance is very important. If the objects are spread over in the schema, so we can call one by one and we can take all of them in the cache or memory, and this will degrade the performance of the database. But just for the package means that we can just open required collected modules
so that we can use the least resources. Similarly, it will recompile each and every object. It will stop to recompile each and every object rather than to compile a single object. So सिंगल ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ऑब्जेक्ट को कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि वन बाय वन ऑल ऑफ देम। ये भी हमें एक परफॉर्मेंस का एज प्रोवाइड करता है। ऑथराइजेशन इसके लिए बहुत आसान है कि आप एक एक मॉड्यूल को, एक एक फंक्शन और प्रोसीजर को ऑथराइज करें, या आप एक पैकेज को कर लें जिससे कलेक्टिव जो हमारे पास जो ऑथराइजेशन के इश्यूज होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। सो ऐड इन पैकेज बॉडी बाय हाइडिंग फ्रॉम द यूज़र स्पेसिफिकेशन। हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर हम ये देखें कि हमारे पास इंसर्ट रिकॉर्ड हमने करना है और ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर कॉल फ्रॉम आउटसाइड। तो ये बाहर का एक प्रोसीजर है जो हम यूज़ कर रहे हैं और इसको हम ऐड करके बॉडी में रखेंगे, तो स्पेसिफिकेशन में इसको हम नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हिडन होगा यूज़र से, यूज़र को कोई पता नहीं होगा या क्लाइंट को कोई पता नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर पैकेज में ये प्रोसीजर क्या काम करता है। तो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ वे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट द प्रोग्रामिंग so that it will manageable commercially when we deploy our software for our customer or client. इसी तरीके से इन्वॉकिंग पैकेज स्पेसिफिकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैकेज को कैसे इन्वॉक करते हैं। पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो फंक्शंस और प्रोसीजर्स के लिए है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये है कि आप पैकेज का नाम दें, उसके बाद आप पैकेज के लिए आप मेंशन करें कि आप इसको किस फॉर्म में करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक पैकेज आ जाएगा और पैकेज के पास हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन हमें इसलिए पता लग रहा है कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है इस वैल्यू को। तो दिस इज़ कॉल्ड आवर पैकेज। एंड सिमिलरली वी हैव अगेन सेम पैकेज, वी आर एग्जीक्यूटिंग अनदर procedure and we are giving this parameter, so this will execute. So these both will be executed within this particular block, and then we can collectively execute both together as a package objects.